दिया था इस बार. It is a complete sweep. Nobody expected, nobody thought, nobody actually, got it completely right. There were differences. So I want to start with the numbers and what the message this election conveys at a broad level in the context of an economic conference. Mr. Scindia, do you find a correlation between the economics and the politics and the victory in Madhya Pradesh and Chhattisgarh and Rajasthan with the economics on the ground? I think there definitely now is a correlation in the new paradigm that India has transformed into between politics and economics. And for someone like me with an economic background, it pleases me to an umpteenth end that today good economics is making for good politics. And states where you have seen a new development paradigm and where lives have been transformed through economic policies, uh, policies based on infrastructure, policies based on raising quality of life of people across the state, those states have been continuously rewarded. A case in point for you is a state like Madhya Pradesh, a state that was considered as a Bimaru state in 2003. You visited Arnab many, many times, and we had many conversations about it. A state that had no roads, no electricity, no irrigation sources. That state, in a period of 18 years, you had 44,000 kilometers of roads. Today, you have 5 lakh kilometers of roads. You have 5,000 megawatts of electricity. Today, you have 29,000 megawatts of electricity. You had 7.6 lakh hectares of land under irrigation. Today, you have 48 lakh hectares of land under irrigation. You've transformed people's lives. And therefore, for the 5th time, the Bharatiya Janata Party has been rewarded with an overwhelming mandate. And I thank the people of Madhya Pradesh, I bow down to the people of Madhya Pradesh for entrusting us with their future for the next 5 years. And we are committed to continually transform lives and take Madhya Pradesh to the heights of development in the country from a state perspective. Well, that's, more power to you on that, for what you're doing on the ground. I'm a political journalist. And it's the Prime Minister's vision, the Prime Minister's directive. And that's why you've seen a transformation across all 3 states. Chhattisgarh, where no one gave us a chance. Rajasthan, where people said that it looks very difficult. Madhya Pradesh, where you've had 4 terms, and you've seen an overwhelming response. 54 out of 90 seats in Chhattisgarh, 117 seats in Rajasthan, 163 seats in Madhya Pradesh. An overwhelming response because of the trust and belief in the Prime Minister's capability to be able to transform lives. Okay. So I will skip the question which everyone wants me to ask about the chief ministerial prospects in Madhya Pradesh and the fact that you're very much seen to be one of the key contenders, because I know you'll deflect it. You have 5 set answers for it. No, I never deflect. You've known me long enough. You also happen to have known my father. Yes. Whether it was my grandmother, my father, me, our lives are not about chairs and positions. It's about Janaseva, it's about development, it's about progress, it's about the ability to change lives. And therefore, for me, what's important is getting up in the morning and thinking of new ways of doing things, bringing in new processes and techniques, and thinking in out-of-the-box ways to be able to change the way things are into the way things should be. You know, someone said, why did the Congress lose so badly in Madhya Pradesh? कांग्रेस की इतनी बुरी तरह से सफाया कैसे हो गया? क्योंकि उनका पूरा फोकस था, their whole focus was your belt, कि चंबल ग्वालियर बेल्ट में ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराना है, तो पूरी फोकस उनकी आप पे थी. और कई मीडिया वालों ने भी कहा कि 28 में से 4 सीट, 3 सीट, 2 सीट आपको मिलेंगे. दिस टाइम, पिछली बार शायद 5 सीटें मिली थी आपको, 7 मिली थी. इस बार आपको 18 सीट मिली है.
उसी चंबल चंबल ग्वालियर बेल्ट में। तो मैं, बिफोर आई गो टू अदर क्वेश्चंस, मैं जानना चाहूंगा, इतनी डायरेक्ट अटैक आप पर कि आप गद्दार हैं, आपके कद को लेकर बात की आपके फैमिली को लेकर बातचीत की गई, मतलब कि मुझे लगा कि पूरा कैंपेन जो था कि आपको नीचा दिखाने के लिए था। तो व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट, एंड बिकॉज ऑफ दैट डिड यू गेट मोर इन्वॉल्व इन द कैंपेन? Was it also a personal fight between you and the Congress party, which you were a part of for so long? देखिए, मैं तो मानता हूं अर्नब कि मैं अध्यात्म में थोड़ा विश्वास रखता हूं। इस पृथ्वी पर हम सबको, आपको, हमें बड़ा सीमित समय दिया जाता है। कब बुलावा आएगा आपका या हमारा, हमें नहीं मालूम। जो समय दिया गया है उसका सदुपयोग किया करो, सकारात्मक सोच रखो, लोगों के विकास और प्रगति में, लोगों के दिल में एक स्थान पाने की कोशिश करो। नकारात्मकता के लिए ना मेरे पास समय है, ना मेरे दिमाग में वो विचारधारा और ना वो सोच है। और जब मेरे प्रति गालियां दी गईं, आरोप लगाए गए, श्राप दिए गए, सबसे, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, नीच से नीच शब्दों का इस्तेमाल किया गया। मैंने एक ही बात कहा था कि इन सब को जवाब मैं नहीं, लेकिन क्षेत्र और प्रदेश की जनता देगी। और 2020 के उपचुनाव में 28 सीट कांग्रेस की थी। जो 28 उपचुनाव हुए, कांग्रेस की 28 सीटें थी, और उन 28 सीटों में से 9 सीट भी कांग्रेस रिटेन नहीं कर पाई। 19 सीट भाजपा के पक्ष में गई। उसके बाद भी उनका मुंह बंद नहीं हुआ, यह सिलसिला चलता रहा। और इस चुनाव में भी मैंने कहा था कि ग्वालियर चंबल की जनता, मध्य प्रदेश की जनता जवाब देगी। 34 में से 19 सीट हम लोग जीते हैं। और एक खास नेत्री ने मेरे परिवार पर कलंक लगाने की कोशिश की, मेरे कद की बात की, तो मैंने कहा ग्वालियर चंबल और प्रदेश की जनता ने उनको अपना कद बता दिया है। There are a couple of huge changes which you have brought. I was so happy to hear about it. जैसे कि आप जानते हैं कि इन एयरपोर्ट्स में आप जाते हैं तो आप देखते हैं रिजर्व्ड लाउंज। आपने देखा होगा रिजर्व्ड लाउंज, जहां सिर्फ नेता जाते हैं, बड़े बड़े नेता जाते हैं। मुझे अभी भी पता चला, एंड आई वांट यू टू टॉक अबाउट इट बिकॉज आई थिंक दिस इज अ कल्चरल इशू, कि आपने रिजर्व लाउंज तोड़ दी है। मैंने सुना दैट यू हैव ब्रोकन द वीआईपी लाउंज। जो वीआईपी लाउंज होता है एयरपोर्ट में, इन्होंने वीआईपी लाउंज तोड़ दी है, हमने सुना है। आई वॉन्ट टू नो, इज इट ट्रू? ए, व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड इट, एंड व्हाट इज द इंपैक्ट? क्योंकि मैं हमेशा चाहता था दैट पीपल शुड जस्ट वॉक इनटू एन एयरपोर्ट, पर हम एयरपोर्ट में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, तो नेता अलग बैठते हैं, वीआईपी अलग बैठते हैं, आम आदमी अलग बैठते हैं। तो टेल मी द स्टोरी अबाउट दिस बिग चेंज दैट यू ब्रॉट इन बिफोर वी गो इनटू द इकोनॉमिक इश्यूज। नागर विमानन क्षेत्र में एक क्रांति आई है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। अभी जो वीडियो हमने देखा, उनकी सोच और विचारधारा की हर यातायात का साधन उपलब्ध होना चाहिए आम व्यक्ति और आम आदमी के लिए। और उसी सोच के साथ, चाहे उड़ान योजना हो, उड़े देश का आम नागरिक, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़े। हमारी एयरपोर्ट्स की संख्या 2014 में 74 थी। 65 वर्ष आज़ादी के समय में 74 एयरपोर्ट बने। उदाहरण के तौर पर एक एयरपोर्ट एक साल में। पिछले 9.5 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 75 नए एयरपोर्ट बने हैं। 149 एयरपोर्ट आज देश में बन चुके हैं, वाटरड्रोम और हेलीपोर्ट लेके। तो जो 65 वर्ष में भारत में हम लोग कर पाए हैं, वही प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उससे ज्यादा 9 साल में हम लोग कर पाए। और मेरा लक्ष्य है अर्नब, ये 149 का जो आंकड़ा है, मैं 220 तक ले जाना चाहता हूं 2030 तक। 220 एयरपोर्ट्स हमारे देश में होने चाहिए।
उन इलाकों में जहां कभी भी किसी भी व्यक्ति ने बड़ा विमान छोड़ो छोटे विमान में भी प्रवेश न किया हो, रूपसी जैसे जगह में, असम में, आप उत्तर पूर्वी क्षेत्र से आते हैं, चाहे दरभंगा की हम बात करें, चाहे उड़ीसा में कोस्ट के उस तरफ भुवनेश्वर से 8 घंटे दूर झरसुगुड़ा में, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एविएशन मैप से हटाए गए थे। और जब ये क्रांति आई है तो यातायात के नंबर बढ़े, और जब यातायात के नंबर बढ़े पिछले विंटर के सीजन में, क्योंकि हमारा एक सीजनल इफेक्ट होता है नागर विमानन में, हाई सीजन दशहरे से जनवरी के अंत तक, और फिर लो सीजन आ जाता है अप्रैल तक। अप्रैल में हमारे बच्चों की छुट्टियां होती हैं तो हाई सीजन फिर उड़ जाता है जुलाई तक, और फिर अगस्त सितंबर फिर थोड़ी मंदी होती है, फिर अक्टूबर से शुरू हो जाता है। दिसंबर के माह में क्यूज बड़ी लंबी हो गई थी दिल्ली में, लोगों का फ्रस्ट्रेशन बहुत था। तो मैं एयरपोर्ट, कंजेशन इन द एयरपोर्ट, कंजेशन एयरपोर्ट में, तो मैं एयरपोर्ट पे गया 12 दिसंबर को पिछले वर्ष, और मैंने स्वयं समीक्षा की 4-5 घंटे की, और एक ऑपरेशंस एक्सरसाइज किया। मैंने कहा कोई कारण नहीं होना चाहिए जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता मतलब यात्री, वो इच्छुक है सर्विस के लिए। सर्विस दिया जाता है प्लेन कंपनी के द्वारा, एयर इंडिया हो, इंडिगो हो, स्पाइस जेट हो, छोटे कंपनीज हो, अकासा हो, जो भी हो। यात्री और सर्विस प्रोवाइडर के बीच में गति अवरोधक के रूप में, स्टॉप गैप के रूप में एयरपोर्ट अपना पूर्ण भूमिका अगर नहीं निभाए तो नागर विमानन मंत्रालय वहां बैठकर पूर्ण प्रक्रिया को देखेगा ताकि कोई भी यात्री को संकट का सामना ना करना पड़े। और जब मैं वहां गया मुझे मालूम पड़ा कि एंट्रेंस द्वार कम है। तो द्वार कम क्यों का है? वो इसलिए कम है क्योंकि अर्नब गोस्वामी जी पायलट हैं, पायलट और क्रू के लिए द्वार एक रिजर्व्ड होता है। मैंने कहा कोई द्वार किसी के लिए रिजर्व नहीं होगा, सभी द्वार खोलो सभी यात्रियों के लिए, और 2 एक्स्ट्रा द्वार वहां मैंने खुलवा दिए। तो एंट्रेंस से अंदर आने के लिए कोई कठिनाई नहीं। उसके बाद चेक इन काउंटर्स हमने बढ़वाए, बैगेज ड्रॉप काउंटर्स बढ़वाए। ठंडी के मौसम में आप कोट वोट पहन के, स्वेटर पहन के जाते हैं, तो वो ट्रेज जो सिक्योरिटी की हैं, उन एक व्यक्ति को एक ट्रे के बदले में 2 की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक में बैगेज डालता है, एक में कपड़े डालता है, जो समर में हम लोग को जरूरत नहीं पड़ती। जी। तो वहां कंजेशन हो गई, लंबी लाइन, आधा घंटा, एक घंटा। तो मैंने कहा एक्सरे मशीन्स और कैरोसेल्स चेक करने के लिए काफी क्यों नहीं है? तो मुझे बोला गया कि हमारे पास एयरपोर्ट में जगह नहीं है। तो मैंने कहा एयरपोर्ट में जगह नहीं है, आइए चलिए हम देखते हैं कहाँ जगह बनाते हैं। तो देखते देखते हम लोग पहुंचे वीआईपी लाउंज में। तो मैंने कहा ये वीआईपी लाउंज का जगह क्या है? तो सर ये आप लोगों के लिए है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अर्नब गोस्वामी जैसे लोगों के लिए है। प्लीज जो एयरपोर्ट में आते हैं, एयरपोर्ट में लोग सीरियसली लेंगे एयरपोर्ट में। मैं आज तक नहीं, मैंने बोला ये किसी की मंत्री जी मैं मजाक कर रहा हूँ। हाँ, मजाक कर रहे हैं। देखो क्या जीवन में आज तक देखो लाइन में कितना अभी भी लाइन में खड़ा हुआ हूँ। जिंदगी में कभी कभी मजाक भी लेना चाहिए अर्नब को। तो मैंने कहा अर्नब गोस्वामी जी मेरे साथ लाइन में खड़े हो जाएंगे, चिंता की बात नहीं है। तो वो वीआईपी लाउंज हमने तोड़ा। वेरी गुड। जिस दिल्ली के एयरपोर्ट में केवल 11 मशीन थी आपका सिक्योरिटी चेक करने के लिए अर्नब, 12 दिसंबर से 30 जनवरी तक, मतलब 1.5 महीने से कम समय में, उसी दिल्ली के एयरपोर्ट में 11 मशीन से हमने 23 मशीन लगा दी, और कंजेशन वहां खत्म। फिर बोर्डिंग गेट्स में हमने कहा कि हम डिजी यात्रा लगाएंगे। अब हमारे रिपब्लिक टीवी के बहुत सारे कर्मचारी भी नहीं, आज दिल्ली एयरपोर्ट इस्तेमाल करने के समय में डिजी यात्रा इस्तेमाल करते होंगे। जो नॉर्मल व्यक्ति को 8 से 15 मिनट लगता है एयरपोर्ट के एंट्रेंस से प्लेन बोर्ड करने के लिए, डिजी यात्रा उपभोक्ता वाला को एग्जैक्टली 3.5 से 4 मिनट लगते हैं। और आज अर्नब, जहां डिजी यात्रा पिछले वर्ष के पहले था नहीं इस देश में, आज भारत में 13 एयरपोर्ट्स में डिजी यात्रा मैंने स्थापित कर दिया है। 35 लाख ऐसे ऐप डाउनलोड हो चुके हैं फोन्स पर, और 90 लाख यात्रियों ने डिजी यात्रा आज तक इस्तेमाल कर दिया है इस देश के अंदर।
तो एक परिवर्तन हम ला रहे हैं, और ये हमने शुरू की दिल्ली एयरपोर्ट के साथ। फिर सारे 6 के 6 मेट्रोज के एयरपोर्ट्स मैंने लिए जहां कंजेशन होता है। उसके बाद 10 और एयरपोर्ट्स जहां कंजेशन का अनुभव होता है, पटना, गुवाहाटी, जयपुर, कोचिन, गोवा, और सभी के प्लान्स बनाए। कितने एंट्रेंस द्वार हैं, कितने एटीआरएस मशीन हैं, डिजी यात्रा इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, कितने डिपार्चर गेट्स हैं, और उसको मैं ऑन अ वीकली बेसिस मॉनिटर करता हूं, जो टारगेट्स मैंने दिए हैं। और उस पर ये कंजेशन का सीजन निकल जाए तब आप और हम विस्तृत तरीके से प्रेजेंटेशन अमेजिंग, अमेजिंग, आई एम सो हैप्पी। मैं इस पे 2 मिनट रिस्पॉन्ड करूं। पहले तो जीवन भर में कभी आज तक मैं कोई ऐसे रिजर्व लाउंज के पास नहीं गया। आप क्यों मेरा नाम खराब कर रहे हैं? अब लोग मजाक नहीं समझते। दूसरी बात, and there are some people who may not understand this in Hindi. So Daniel, I want to make a point to you about what was said here, just translated. Just by changing physical infrastructure, you can't transform the country. And I was joking earlier that when I come from Heathrow to Bengaluru airport, Daniel, you must go to Bengaluru, you feel you've come to a first world nation. But the point is not that. You can create the physical infrastructure. आप physical infrastructure बना सकते हैं, बड़े-बड़े एयरपोर्ट बना सकते हैं, मगर उस बड़े-बड़े एयरपोर्ट में अगर नेता और वीआईपीज़ के लिए एक लाइन लगती है और आम आदमी के लिए अलग लाइन लगती है, तो देश की प्रगति नहीं हो सकती। आज ये अमेजिंग चीज है कि सेवा की भावना ये हो that you create a physical infrastructure and the minister has broken the VIP lounge and gone into why there is congestion for the common man at the Delhi airport. And if a VIP lounge is coming in the way, he's broken that. For a country like India, this is a huge transformation. And 5 ATRS machines fitted in that VIP no, lounge, I think it's a huge transformation. And I compliment you for that, because just the day this VVIP culture ends in the country, we will move faster. 2% GDP में और add हो जाएंगे तो. So it's absolutely amazing, what you've done there. I would like to talk to you about the Northeast as a case study. Connectivity in the Northeast as a case study. It's almost become obsessive for the government. How quickly are we connecting the Northeast, and what impact do you see once you do that, and how deep are we going into the Northeast? So the Northeast was always, the 7 or 8 sisters were always viewed from a kaleidoscope of almost being stepsisters in India for 65 years. The transformation that the Prime Minister has brought, and this has not got to do with civil aviation alone, across the board, is that he has brought what used to be, quote unquote, the periphery of India. He's transformed that into the quote unquote mainstream of India. And so the Northeast, which used to be Purvottar, furthest corner of India, has now been transformed into Purvodaya, from where India's sun rises. Because when the sun rises, it rises from the east. And that concept has been enshrined in all his developmental paradigms for the Northeast. The Northeast had 7 airports. Today the Northeast has 16 airports. You will not believe that states like Arunachal Pradesh and Sikkim did not have a single airport in India in 65 years of her existence, independence. Today Arunachal Pradesh has 3 airports. Sikkim has 1 airport. A state like Assam has close to about 5 to 6 airports. We have 16 airports. And flight connectivity, we had roughly about close to 500 air traffic movements in 2014. Today we have above 1100 traffic movements to the Northeast. And our plan is not only to connect the Northeast, but to convert our Army's advanced landing grounds, Tezu, Pasighat, all of those into airports. Wow. And we are flying the Indian-made Dornier aircraft now from Guwahati, places like Guwahati to Tezu to Pasighat, connecting the last mile. And the same transformation has taken place in highways. Close to about 4,500 kilometers of roads have been built. The longest bridge
in the history of India today has been built in the state of Arunachal. So that whole transformation has taken place where the periphery today has become the mainstream. What used to be considered as backward districts in India, 200 districts out of 600 districts were backward, quote unquote. The terminology has been changed, and please understand that brings about a mindset change from a backward district into an aspirational district, from a backward block into an aspirational block. And today, out of those 200, close to about 50 to 60 districts are progressing even faster than other districts that have progressed tremendously in the last 75 years of Indian independence. And that's the transformation that the Prime Minister has brought about. Aspirational, when we were young, traveling in a plane was a big thing. It was a very, very major event in your life. I think personally I would have gone on a plane for the first time maybe well into my teens, to be very honest. I'm an army officer's son. We used to be very happy when we got a reserved seat in a train. Today, I wanted to share with everyone today. आज जो हम कहते हैं, आप देखिए, एयरपोर्ट लोग ऐसे जाते हैं जैसे बस से पहले जाते थे. It is amazing transformation. I want you to tell people कितने लोग हमारे देश में आज प्लेन से ट्रैवल कर रहे हैं और वो संख्या पहले क्या थी. वी नीड टू अंडरस्टैंड कितनी दूर एज अ कंट्री हम कितनी दूर आ चुके हैं, वो संख्या क्या है और कहां तक जाने वाली है. तो हमारे देश में 2014 में, जैसे मैंने कहा, 74 एयरपोर्ट थे, आज 149 एयरपोर्ट है. इन 149 एयरपोर्ट को मैं 220 एयरपोर्ट तक ले जाना चाहता हूं 2030 तक. पैसेंजर्स, यात्री की संख्या 2014 में 6 करोड़ थी. 9.5 वर्ष में आज 14.5 करोड़ हो गई है. और मेरा अनुमान है कि ये वर्ष, फर्स्ट ईयर आफ्टर कोविड, हम लोग 15.5 करोड़ तक पहुंच जाएंगे इसी वर्ष में. मतलब 10% वृद्धि एक ही वर्ष में हम लोग कर पाएंगे. और आगे प्री कोविड हमारी रिकॉर्ड थी. प्री कोविड इस देश के अंदर कि एक दिन में 4,20,000 यात्रियों ने सफर किया. 24 नवंबर को इस देश के अंदर 4,67,000 लोगों ने यात्रा की है. मतलब प्री कोविड समय से 40,000 ज्यादा यात्री एक दिवस में, मतलब 10% इंक्रीज हो चुका है. और 2030 तक आप नोट कर लीजिएगा अर्नब, जो 6 करोड़ से 14.5 करोड़ और इस वर्ष 15.5 करोड़ हम लोग करने वाले हैं. 2030 तक ये 14.5 करोड़ 42 करोड़ तक ये संख्या जाएगी जो सिविल एविएशन के द्वारा आवागमन करने वाली है. मतलब 3 times growth you're going to experience within the next 7 years in this country. And how is that going to be possible? You had a fleet size of 400 aircraft. 2014 तक केवल 400 प्लेन थे इस देश में. जो आपने वीडियो में देखा, पिछले वर्ष एक ही एयरलाइन का ऑर्डर 65 वर्ष में जितने प्लेन इस देश में थे, एक एयर इंडिया का ऑर्डर 470 प्लेन का हो चुका है एक ही साल के अंदर. इंडिगो का ऑर्डर 500 प्लेन का हो चुका है. फेजेस में आ रहे हैं, पर वो 400 प्लेन जो 2014 पे थे आज 700 तक पहुंच चुके. और यही 700 का आंकड़ा 2030 तक करीब करीब 1500 से 2000 तक प्लेन्स का आंकड़े तक ये पहुंचेगा, जिसके आधार पर ये ग्रोथ हम देखेंगे. और ये ग्रोथ केवल बड़े बड़े एयरपोर्ट्स की नहीं, ग्रोथ केवल बड़े बड़े शहरों की यात्री की नहीं, ग्रोथ केवल वाइड बॉडीड एयरक्राफ्ट विदेश जाने के लिए और 737 और एयरबस की नहीं, लेकिन रीजनल एयरलाइंस की ग्रोथ है. उड़ान योजना के तहत ये कहानी बताई नहीं जाती. 4 नए छोटे एयरलाइंस का जन्म हुआ है. फ्लाई बिग, फ्लाई 91, इंडिया वन एयर, स्टार एयर, जो केवल छोटे छोटे शहरों को जोड़ती है 50 सीटर एयरक्राफ्ट के साथ, 35 सीटर एयरक्राफ्ट के साथ. तो जो क्रांति और रेवोल्यूशन भारत में हो रहा है, केवल हब पे नहीं हो रहा,
लेकिन स्पोक पे भी हो रहा है, छोटे छोटे शहरों में भी हो रहा है। आपके मेट्रो के जो एयरपोर्ट्स हैं 6, जो बड़े बड़े शहर हैं, आज 21 करोड़ की हमारी क्षमता है उन एयरपोर्ट्स की। अगले 5 साल के अंदर ये 40 करोड़ तक क्षमता जाएगी। अगले साल जेवर का एयरपोर्ट शुरू होगा, अगले साल नवी मुंबई का एयरपोर्ट शुरू होगा। पिछले वर्ष गोवा में 2 एयरपोर्ट्स बन चुके हैं और 2030 तक 15 ऐसे शहर होंगे इस देश के अंदर जहां एक एयरपोर्ट नहीं लेकिन 2-2 एयरपोर्ट बनने जा रहे हैं। Jewar will be one of the largest airports. Delhi airport will be one of the largest airports. Delhi today is servicing 70 million. By next February, we will take that to 109 million capability, which means we will be only second to Atlanta, the largest airport in the world. That's just incredible. You know, I want to put these numbers in perspective. And the fact that we have done it. हम बोल नहीं रहे, हम कर रहे हैं इसको. हमारी देश की ऊर्जा इतनी है, हम अचीव कर रहे हैं. ये नंबर अगर किसी को आप विदेश में बोले, if you tell anybody in the world India is growing at this rate, they'll say you're making it up. Now, what does this translate to in percentage terms? In percentage terms, what Jyotiraditya Scindia is saying is that in a period of 9.5 to 10 years, or maybe 13 years, we would have grown the number of airports in this country by 300%. What you're saying in a similar period of 13 to 14 years, if I take that number of 2030 as your cutoff number, then we would have increased air traffic in this country by 700%. Because you're saying you're going from 6 crore to 15.5 crore to 42 crore, 420 million Indians traveling on flights. And that's a stupendous number. Think about it this way. Incredible number. That you're carrying the population of Europe in a year. Yeah. By 2030. It's amazing. 500 million is the population of Europe. That's beautiful. 1.5 times the population of the United States of America. That's wonderful. In 1 year. No, it's the numbers have to be really digested to be understood. Now, can you tell me a little bit, सब लोग जानना चाहते हैं कि आप cabinet मंत्री हैं. And Mr. Scindia, you have been a minister in the Congress government. You have been a very long-standing member of parliament, though you still look like a youth leader. But बात ये है कि That's a problem. It's good. And that's a problem for you too. No, please don't pull my leg. We are not getting any younger. The question is, Mr. Scindia, आप कांग्रेस के मंत्री रहे हैं, आप बीजेपी में, भाजपा में मंत्री में हैं, आप तब भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में थे और अब भी हैं. You have held very important portfolios. Petroleum, civil aviation. Contrast the working style. Power, telecom, petroleum, commerce, industries, and no, not petroleum, commerce, industries, and now civil aviation. In terms of the functioning, informal, inside functioning, without giving details, लोग जानना चाहेंगे मोदी सरकार में काम कैसे होता है, मतलब accountability metrics क्या है, जो आप कहे accountability metrics कहें उसको, या फिर आप इसको क्या जो हम प्राइवेट सेक्टर में कहते हैं टारगेट सेटिंग, वो टारगेट सेटिंग कैसे होती है, आप अगर उस पर if you can throw some light, it will be very interesting for us. So very simply put, if you ask me to put it in one word, Prime Minister Modi's government is a meritocracy. When he says perform, transform and reform, he's not only talking about what he wants to do in the country, but he's talking about what he wants to do in governance. And he does not look for incremental change. He looks for monumental change. Because transformation will come in this country, cannot come incrementally. It must come and can only come monumentally. What is that monumental change? That monumental change is when you create 3.8 crore Pradhan Mantri Awas Yojana houses in 9 years, when in 65 years you have built only 3 crores. That transformation change is when in 9 years you have built close to about 10.75 crore toilets, making sure that 100% saturation, every Indian has a toilet. That monumental change is when you connect 9.6 crore women
with Ujjwala cooking gas, and they no longer have to inhale 2 packets of cigarettes a day worth of smoke by blowing on wood and coal to cook their food. That transformational change is when 11 crore farmers through UPI and Jan Dhan accounts get 6,000 rupees in their bank account every year. There was a Prime Minister earlier in India who said that if I send 1 rupee from the center, only 15 paise reaches the beneficiary. Today in India, when Prime Minister of India Narendra Modi presses a button in Delhi, through the creation of 50 crore Jan Dhan accounts, 50 crores, a very simple number to mouth, very difficult number to execute, 50 crore Jan Dhan accounts, when he presses a button in Delhi, without any bicholi, without any bhrashtachar, that money reaches Arnab's bank account in the back of beyond village of India, and which he can check on his phone instantly through UPI. That's the transformation that you've seen in India, which is monumental. 45% of the world's digital transactions today happen in India on Indian phones. The fact that in COVID, how many of you took the COVID vaccine? 1 or 2? How much did you pay for it? And tell me, how did you get the evidence that you've taken it? 220 crore vaccines given and the digital certificate coming on your phone. In New York City, Arnab, and you've reported it, and in London, you used to walk into a hospital and people on a handwritten note, Arnab Goswami, date of birth, on this date, here's your chit. In India, back of beyond village, the customer would get his certificate on his phone. That's a monumental transformation in India, ladies and gentlemen. And the Prime Minister's vision is, if India has to become a Vishwa Guru, if India has to become a world economic power, it cannot be by just Arnab Goswami and Jyotiraditya Scindia and the people in this room. All 150 crore Indians have to be part of that transformation. And they can only be part of that transformation when they are empowered and they are given the same tools as all of us sitting in this room to bring about that transformation. So, give me at the end an example. Thoda anecdote bataiye. Ashwini Vaishnav ji last time gave how presentations are made, how the Prime Minister responds. For monitoring mechanism, I want the people watching this program, streaming live on television and in the hall, to get a sense of the functioning of the government. Because हमको तो numbers दिखते हैं. So everything is measured on a weekly basis. By targets are set by the Prime Minister himself. Targets are set. So whether it's the case of, for me, let me give you my own experience. In civil aviation, the number of airports that are being built in a year, or in the case of steel, which I also happen to have, the number of, the capacity increase that is going to happen this year, how much is being done on a weekly, monthly basis, what is the progress of major projects, are they being executed on time? The biggest problem in India is that you start a project and all of us will attend Bhumi Pujan. And after Bhumi Pujan, disappear. No one worries about it, everyone disappears. And 10 years have passed, chal raha hai. Prime Minister's insistence is not on Bhumi Pujan. His insistence is on Lokarpan. So let me give you my personal example. I am building a civil aviation terminal in Gwalior. Okay. 2 lakh square feet, close to 500 crores. The Bhumi Pujan was done by the Home Minister on the 16th of October 2022. And I guarantee you on your show, Mr. Arnab Goswami, that the Lokarpan will be done within a period of 15 months in January of 2020. That's amazing. It's totally incredible.
2 lakh square That's feet, incredible. 20 aprons, 4 aero bridges, a 500 crore project in 15 months. Oh, that's incredible. I think it's target setting at another level. From today till February end, 8 new terminals are going to be ready for inauguration. Kolhapur, Pune, Gwalior, Jabalpur, Ayodhya, Tiruchirappalli, the new Lucknow terminal, Surat. That's 8 for you. I think you should make the Ayodhya terminal even bigger right now, given the amount of traffic which This you're is going the to first phase of 6,500 square meters. The second phase, I'm taking a cabinet note, will be 50,000 square meters. Wow, that's 5 lakh Ayodhya square Airport. feet. Yes. Ayodhya Airport. Last point to you. So people say, okay, we'll become India the third. today is about scale. Yeah, scale. So, but the people want to know, lastly, okay, we are going to overtake France in GDP. We're going to overtake, I think, Germany. We are now number 5. We've already overtaken France and the UK. We are going to overtake Japan and Germany. Japan and Germany. But what's in it for us? So let's say that we overtake by 2027 Japan and Germany. Aam aadmi ko kya fark padega? What is in it for us? Just present it in as clear terms as possible, and then we'll wrap this up. Economic growth brings with it dividends. Dividends for every single person across the length and breadth of this country. Which is why, if you go back to what I have said over the last 25 minutes, it is the empowerment of every single Indian to be able to contribute to the cause of nation building. Prime Minister's movement right now, Viksit Bharat Yojana, where every van is moving across the length and breadth of India. He wants to infuse energy. He wants to bring about a movement, just like the independence movement, which was a people's movement. We want to create a people's movement to convert India from where she is today into the Vishwaguru. And that, Arnab, is not only on an economic paradigm, it is also on a adhyatma paradigm, a philosophical paradigm. Today, yoga is being done in the United Nations under the Prime Minister's aegis with members of 130 countries. Today, Indian Namaste is done by world leaders. So India is rising not only as an economic power, but she is rising as a cultural power as well. And our concept of Vasudeva Kutumbakam, in our rise, is the rise also of the rest of the world. And that is our concept. As we rise, we take care of the world. Our vaccine Maitri program, our bringing back our calamity rescue hostages from all across the world. It is about being participated in the world movement to bring about world growth, and that's where India needs to be. I love your sense of conviction and your energy. Jyotiraditya Scindia, again, many congratulations on your political success, and wish you all the best for what you're doing in the government. Please, round of applause for Jyotiraditya Scindia. Incredible. Thank you, Jyoti.